Hello friends, let's continue our exercise 3.2 where we are finding square root of the complex number and हमने अब तक दो questions students कर लिए हुए हैं. Now we'll continue with the next question number 3 जिसमें कि हमें complex number दिया हुआ है 1 plus 4 root 3 i. ठीक है ना, i रूट में नहीं है, बराबर है. ध्यान से देखने का, i is not in that square root with that root 3. Okay, it is separate. Now this is again the same procedure we have to apply what we have already done two questions. हम इसको assume कर लेंगे, let square root of 1 plus 4 root 3i is equals to x plus yi. X plus yi. We have to assume this way, and now this square root जो है वो right hand side transfer करेंगे, so that the right hand side it becomes the square root यहाँ से निकल जाएगा 1 plus 4 root 3i is equals to x plus yi whole square. For this point, और राइट हैंड साइड अभी आप उसको एक्सपांड करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड आपका होल स्क्वायर एक्सपांड होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस yi होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप हम लोग राइट हैंड साइड में, दिस इज 1 plus 4 root 3i at left hand side, and in the right hand side x square plus 2xyi plus y square I square. So in the next step, left hand side as it is, 1 plus 4 root 3i is equals to x square plus 2xyi plus y square, और i square के जगह पे -1. रीजन में लिखना है तो I square is equals to -1, as you know. Now next step, right hand side में हमें a plus bi के फॉर्मेट में उसको लाना है. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, अच्छा ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये है y स्क्वायर इंटू -1, मतलब -y स्क्वायर. आई एम राइटिंग -y स्क्वायर हियर along with x square and making a bracket because they are the real terms, plus 2xyi which is imaginary term. तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों a प्लस बी आई के फॉर्मेट में है और हम कंपेयर कर सकते हैं. सो बाय कंपेयरिंग रियल and imaginary parts. So now by comparing real and imaginary parts, we are going to get 1 is equals to x square minus y square. This is, we consider number 1, and imaginary part if you compare, this will be 4 root 3 is equals to 2xy. From this you take a value for y, so this y will become 4 root 3 upon 2x, where this 2 will be cancelled. Therefore y becomes 2 root 3 upon x. Now what you'll do, you just put this y value in equation number first, and therefore put second in first, or you may write from 1 and 2. This becomes 1 is equals to x square minus, instead of y you put this 2 root 3 upon x whole square as it is. So
So this becomes 1 is equals to x square minus. Now this 2 root 3 upon x whole square, it will be numerator का भी square होगा और denominator का भी square होगा. So 2 root 3 whole square, that is going to become 4 into 3. 2 का square 4, root 3 का square, root 3 cancel, root निकल जाएगा, so खाली 3 बचेगा and denominator x square. Now 1 is equals to x square minus 12 upon x square. Further, x square इसका आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x raised to 4 minus 12 upon x square. And now this x square you transfer to left hand side, x square is equals to x raised to 4 minus 12. That is going to become x raised to 4 minus x square minus 12 is equals to 0. Now this becomes quadratic equation of reducible in nature. So consider x raised to 2 is equals to m. इसको आप सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस कर लीजिए. So it becomes m square minus m minus 12 is equals to 0. और अब इसका फैक्टर करना है. So 12 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे आपको 1 मिले. So it will be 4 3s are. So you can do directly if you have properly understood this my direct method, direct trick. So variable is m, both sides you need to write first m in the both the brackets, and the factor is 4 3s are, and the middle term sign is minus. So this minus you have to keep as it is, and now you need this minus. So to get this minus, here which sign you are going to keep? So here I am going to keep plus. So definitely minus plus minus. Okay, and this will be satisfied properly. देख लीजिए, I am going to get this particular factor. Therefore m minus 4 is equals to 0, or m plus 3 is equals to 0. Therefore m is equals to 4 or m is equals to minus 3. अब जरा ध्यान रखने का, ये जो m का यहाँ माइनस 3 का जो वैल्यू मिला है ना, वी नीड टू अगेन रिकंसिडर दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था, देन रिकंसिडर दैट m की जगह पे x स्क्वायर. So instead of m you are going to keep m square, and as a result you have to now keep this original variable x, that is in place of this now. So this become x square is equals to 4 or x square is equals to minus 3. और यहाँ जो ये x square is equal to minus 3 है, here x not belongs to real number, therefore it is not possible. It is not possible. So this way now we have to again come to the this solution. Therefore x is equals to plus or minus root 4. This is plus or minus 2. So x का वैल्यू जो है ना मुझे मिल चुका है. Now this value of x you have to consider, and once you have to consider plus 2, secondly you have to consider minus 2, and you have to put this x value in this particular second equation to get the y. तो आप पहले when x is equals to 2, तो y की वैल्यू क्या हमें मिलेगी? So y was y is 2 root 3 upon x, since y is equals to 2 root 3 upon
x. Therefore, y becomes 2 root 3, 2 root 3 upon 2, 2 to cancel. Therefore, y is equals to root 3. Okay, y is equals to root 3. Okay. Secondly, when x is equals to minus 2, at that time y value will become it is 2 root 3 upon minus 2. 2 to cancel, minus still remains, therefore y is equals to minus root 3. Now on the basis of x and y, you are going to generate actual required square root. What is the actual square root? हमने जो assume किया था, required square root was x plus yi. So now required square root of which question? Question was 1 plus 4 root 3i. So case number 1, when x is equals to 2 and y is equals to root 3, तो जब ये हो जाएगा आपका, तब आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? तो क्या स्क्वायर रूट क्या था हमारा? x प्लस वाई आई, ये था ना स्क्वायर रूट. therefore it will be 2 plus root 3i. और second, when x is equals to minus 2 and y is equals to root 3, y is equals to root 3. X plus yi, therefore it is going to be minus 2 plus root 3i. और अभी इसमें से आप देख लो, ये आपको दोनों स्क्वायर रूट मिलता है. अब आप देख लो इसमें से मैं so when x is equals to minus 2 and y is equals to minus root 3, at this time our square root is x plus yi will be minus 2 minus root 3. And importantly, so this x plus yi, which will be going to be minus 2 minus root 3i. और इसमें हम इसमें 2 को माइनस को कॉमन लेते हैं, तो इट बिकम्स माइनस कॉमन 2 प्लस रूट 3i. नाउ हम दोनों को इसको, ये है 2 प्लस रूट 3i, यहाँ है माइनस 2 प्लस रूट 3i. इसको दोनों को हम कंबाइन करेंगे. सो क्या हो जाएगा? हैंस स्क्वायर रूट ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ, जिसको हमने लिखा है 1 प्लस 4 रूट 3i इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 प्लस root 3i. That's it. So this way, students, we can conclude in every question we have concluded this square root in plus or minus situation. जो भी है हम उस तरह से इसको conclude करते हैं. So this is our final answer, plus or minus 2 plus root 3i. Let's take further next question, number 4. नंबर 4, हमें किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है? व्हाट इज द क्वेश्चन? 3 प्लस 2 रूट 10i. मोस्टली सिमिलर टाइप का हो गया, इसके आप देख लो थर्ड जैसा ही हो गया. लेट्स स्टार्ट.
because we need to have proper practice. ठीक है ना, but the method वही है. So let square root of 3 plus 2 root 10 I is equals to x plus yi. तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे. सो इट बिकम्स 3 plus 2 root 10 I is equals to x plus yi whole square. And in the right hand side you expand whole square, so it becomes 3 plus 2 root 10 I is equals to x square plus 2xyi plus y square I square. Therefore 3 plus 2 root 10 I is equals to x square plus 2xyi plus y square, I square की जगह पे -1, I square is equals to -1. So this becomes 3 plus 2 root 10 I is equals to x square minus y square, real terms x r plus 2xyi, imaginary term xi. Now, by comparing real and imaginary parts, we get what we are going to get. 3 is equals to x square minus y square. This you consider equation number 1. And importantly, next imaginary part compare करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 root 10 is equals to 2xy. Therefore इसमें से y का वैल्यू आप जनरेट कर लो, so it becomes 2 root 10 upon 2x. This 2 will be cancelled, therefore y is equals to root 10 upon x. इसको आप नंबर सेकेंड कंसिडर करो and now put 2 in 1. फर्स्ट में रख दीजिए, इसलिए आपका ये y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. So it becomes 3 is equals to x square minus root 10 upon x whole square. Now further you have to solve. This is x square minus root 10 upon x का whole square क्या हो जाता है, तो root 10 का square 10 upon x का square x square. Now do cross multiplication in the right hand side. It becomes x raised to 4 minus 10 upon x square, and this x square you transfer left hand side, so it becomes 3x square is equals to x raised to 4 minus 10. Therefore x raised to 4 minus 3x square minus 10 is equal to 0. Now we have to make a factor for this 10 so as to have minus to get 3. So 10 का क्या फैक्टर आएगा, so that माइनस करने पे हमको 3 मिल जाएगा, तो के 5 2s are, and 5 minus 2 is going to become 3. So I am going for in the direct method of this factorization. So okay, before that I need to consider in terms of इसको reducible quadratic equation के हिसाब से लेके आना पड़ेगा. So now this equation is reducible in nature, and therefore consider x square is equals to m. So this equation will become m square minus 3m minus 10 is equals to 0, and therefore this is now equation in which you have to solve quadratic factor, and now 10 का ऐसा फैक्टर आपको ढूंढना है कि माइनस करने पे आपको 3 मिले. So 5 2s are 10, 5 minus 2 3 मिलता है. So I am going in the shortcut method and explain this shortcut method. If you can do, you can, but if you don't have any kind of idea or hint about this method, you can do your usual method what you have learned in school, और आप इसको भी कर सकते हैं. So 5 2s are 10, मिडल टर्म का साइन जो है ना माइनस है, तो माइनस पहले यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में लिखने का. अब आपको चाहिए ये माइनस, to answer as an answer you need minus, and you have kept here minus. So in
कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस माइनस, यहाँ कौन सा साइन रखूं मैं कि मुझे माइनस मिले? So definitely you have to keep plus. So my factors are m minus 5 is equals to 0 or m plus 2 is equals to 0. And now m की वैल्यू यहाँ मिल जाती है, m is equals to 5 or m is equals to minus 2. And now we need to keep m value as x square. Reconsider now ये m square का ये m का वैल्यू एक्स स्क्वायर हम वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2. दिस पर्टिकुलर यहाँ जो ये हुआ है विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिंस x is not belonging to real number, therefore it is not possible. Or you may mention that it is imaginary number. Imaginary आएगा इसका वैल्यू, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं. We can also write we reject this or it is not possible, you have written. और अब यहाँ x स्क्वायर के जगह पे 5 का जो वैल्यू है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. therefore x becomes plus or minus √5. अब ये x की दोनों वैल्यू को लेके आप y की वैल्यू ढूंढोगे. so when x is equals to plus √5, तो मेरी y की वैल्यू जो है, y का मेरा क्या कंसिडरेशन था, √10 अपॉन x. तो लीजिए √10 अपॉन x. सिंस y is equals to √10 upon x, therefore y is equals to √10 upon √5, therefore y is equals to, इसको हम कंबाइन रूट में ले सकते हैं, है ना. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिविजुअल रूट है तो मैं उसको पूरे को कंबाइंड रूट कंसीडर कर सकता हूँ. सो इनसाइड दिस रूट दिस 5 to the 10 is going to be cancelled, so y becomes only √2. y is √2. Similar to that, when x is minus √5, again y value is going to be √10 upon minus √5. Again I consider numerator denominator all together minus बार रखना है, 10 upon 5. रूट तो माइनस तो रूट के बाहर ही है, so again this will be 5 to the 10 and therefore y becomes √2 minus √2. Got this point? Now I got x value with that y value and now making अपना जो स्क्वायर रूट का आंसर हमको जो फाइंड करना है. नाउ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ, क्या था हमारा क्वेश्चन? बेसिकली हमने किसका स्क्वायर रूट ढूंढना शुरू किया था? क्वेश्चन देख लो तो 3 + 2√10i is, so first case when x is equals to, what is the value for x? √5 and y is equals to √2. In that situation what is my square root value will become x plus yi is equals to, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, that is going to be √5 plus √2i. And in the second situation we have when x is equals to, look at the value of x minus √5 and y is equals to minus √2. In this situation what is our square root? That is x plus yi will become minus √5 plus minus √2i. So in middle this become minus, or you may take minus common, so √5 plus √2i. And now you can notice this is √5 plus √2i पॉजिटिव है और ये √5 plus √2i नेगेटिव है. तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ दोनों को
दोनों आंसर्स को, and hence I can write a common answer. Hence required square root of 3 plus 2 root 10i is plus or minus root 5 plus root 2i. खत्म हो गई बात. So student, very proper method you need to execute, and it is very step by step methodology where mistake is not permitted, because anywhere you have made some mistake, it will going to give, finally it is not going to give a proper answer, perfect answer. Fine. With this, now let me finish with this last question in this particular first क्वेश्चन, जिसके अंदर फाइंड स्क्वायर रूट करने के लिए अपने को टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं. तो नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन आई एम टेकिंग एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडेस सेशन. Look at this first fifth question given to you. It is 2 in the bracket 1 minus root 3i. This is your question, last fifth one. And now let us solve. Let square root of this 2 into 1 minus root 3i, this is x plus yi. ये तो बेसिक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और अब स्क्वायर रूट को ट्रांसफर कर दो सामने. So this becomes 2 into 1 minus root 3i is equals to x plus yi whole square. X plus yi whole square. Therefore, now इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे. एक तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके ले लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो दिस बिकम्स 2 minus 2 root 3i is equals to x square plus 2xyi plus yi whole square. Therefore, 2 minus 2 root 3i is equals to x square plus 2xyi plus y square I square. Therefore, 2 minus 2 root 3i is equals to x square plus 2xyi plus y square into I square के जगह पे -1, and this will be 2 minus 2 root 3i is equals to x square minus y square. I am keeping with this x square as a real term together, plus 2xyi, imaginary term separate. Now by comparing real and imaginary parts, we get 2 is equals to x square minus y square. This gives number 1, and minus 2 root 3 is equals to 2xy. ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ माइनस है बीच में, तो माइनस साइन उसके साथ में गिननी चाहिए. सो यू नीड टू कंसिडर द साइन अलोंग विद दैट व्हेन यू कंपेयर योर इमेजिनरी टर्म, बिकॉज इट इज साइन इज इंपॉर्टेंट. सो यहाँ हम पहले तो y का वैल्यू लेके y का वैल्यू उसमें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो y इक्वल्स टू minus 2 root 3 upon 2x, and this 2 is going to be cancelled. So the y value is minus root 3 upon x. इसको आप नंबर 2 ले लीजिए and put 2 in 1. तो y का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो आपको फिर x का वैल्यू मिल जाना है. Therefore 2 is equals to x square minus root 3 upon x whole square. तो भी आप इसका होल स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा. 2 is equals to x square minus root 3 का
-√3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, मगर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर. And now you could do cross multiplication. 2 is equals to x raised to 4 minus 3 upon x is whole upon, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें. So when you do the cross multiplication, x raised to 4 minus 3 whole upon x square. Therefore ये x square को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, so it becomes 2x square is equals to x raised to 4 minus 3. Therefore x raised to 4 minus 2x square minus 3 is equals to 0. So everything I have transferred to right hand side, and now it becomes quadratic equation in reducible nature. Consider x square is equals to m, and when you put x square is equals to m, this equation will become x is m squared minus 2m minus 3 is equals to 0. Now under this quadratic equation, which is in the variable m, now you have to find the factors, and you have to consider 3 का ऐसे दो फैक्टर बताओ कि माइनस करने से 2 मिल जाए. तो सीधी बात है, 3 बन जा 3 and 3 minus 1, you are going to get 2. Yes or no? So now in the shortcut pattern, I am going to show the solution of this. So m variable you have to keep, factor you have considered 3 1 that you have to keep. मिडल साइन का साइन क्या है, मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस. सो माइनस यू टू कीप हियर. एंड मुझे चाहिए माइनस, सो मैं यहां कौन सी साइन रखूंगा, ये माइनस के साथ यहां कौन सी साइन रखूंगा कि मुझे माइनस मिलना चाहिए, तो क्या प्लस रखेंगे सर. ठीक है, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m plus 1 is equals to 0. Got this point? And now with this we can find out m is equals to 3 or m is equals to minus 1. And now importantly you have to re-substitute, since x square is equals to 3 or x square is equals to minus 1. This x square is equal to minus 1. Here x is not belongs to real number, therefore it is not possible. So हम सिर्फ ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 को लेके x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 का इंफॉर्मेशन आगे कंसिडर करेंगे. एंड नाउ टू गेट द y वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x वैल्यू. तो व्हेन x इज इक्वल टू √3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमने यहाँ कंसिडर किया था, y का सेकंड इक्वेशन में देखो वैल्यू था -√3 अपॉन एक्स, -√3 अपॉन x. Since y is equals to -√3 upon x, therefore y becomes -√3 upon √3. √3 cancel, therefore y is equals to -1. ये एक मुझे मिल गया. But when x is equals to -√3, therefore y will be -√3 upon -√3. This is 1. तो x का वैल्यू जब ये √3 है, y का वैल्यू -1 है, और x का वैल्यू जब ये -√3 है, y का वैल्यू +1 है. So now finding required square root. Now required square root.
when x is equals to √3 and y is equals to -1, तो मेरा स्क्वायर रूट क्या होगा? तो मेरा स्क्वायर रूट क्या था? x प्लस वाई आई, तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस -1i। ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या? व्हेन x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x का वैल्यू था -√3 एंड y इज इक्वल्स टू मिला है +1। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी योर स्क्वायर रूट? ओके, x प्लस वाई आई का क्या तुमको वैल्यू मिलता है? तो -√3 प्लस 1i। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ कॉमन मिलता है, तो आप देख लो दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, दैट यू हैव टू डिसाइड। सो यू गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। अच्छा, अब मैं इसमें समझ माइनस कॉमन लेता भी हूँ तो क्या हो जाएगा? √3, ठीक है, -i, और यहाँ ये जो माइनस है बीच में मैं लेके इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। दिस इज बिकमिंग √3 minus 1i, and that is nothing but √3 minus i। तो ये है √3 minus i नेगेटिव एंड दिस इज √3 minus i पॉजिटिव। तो मैं दोनों को कंक्लूड करके लिख सकता हूँ, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन किसका स्क्वायर रूट का बात था? स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 1 minus √3i is equals to plus or minus √3 minus i। Yes or no? So students, this way, these are certain questions to have the square root of complex numbers। इसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस करना। एक मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन उन लोग एग्जाम में पूछते भी हैं, फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट का, और ये बहुत ही इजीली करते हैं स्टूडेंट्स। एज अ यू कैन, इफ यू कैन हैव प्रॉपर प्रैक्टिस देन यू कैन डू इट प्रॉपरली। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, बस जस्ट प्रैक्टिस लेके आपको उसको बराबर से प्रॉपर तरीके से करने के लिए एक आपको प्रैक्टिस जरूर से लेना है। So with that, we conclude today's session. In the next session, we are continue this exercise and we'll learn some more type of questions further given in this exercise. Thank you, friends.